Can you hear me? Shubham, Wasim, आवाज आ रही है? आवाज? Yes. अरे ना, अपने वीडियो स्टार्ट कर ले, ऑडियो म्यूट रखे, वीडियो स्टार्ट कर ले अपने। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, अब अपने अपने वीडियो स्टार्ट करे, वीडियो म्यूट कर रखे जिन्होंने सब। वीडियो स्टार्ट करे अक्षिता, साधना, प्रज्ञा, रवि, विजय बहादुर, पूजा, रिया, ऋषभ, रश्मि, स्टार्ट योर वीडियो। तीन से टुकड़ा के और 30 में ले लीजिए 10 में बीएनटी को यहाँ पे देखिए भाई देखो है और ऑर्डर साथ में देखो 10 में से ऑडियो म्यूट रखे, ऑडियो को। 50,000 लेकिन का नहीं अभी इनका म्यूट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब पब्लिक की सेट होता है 5 लोग गाड़ बचे नहीं, आवाज आ रही है पब्लिक को भी सेट हाँ भाई ये 20 में से करो ये 10 में से आपको करो मुझे वो सामने करे तो फिर मैंने महाराज के लिए दे दो भाई के लिए हाँ भाई ने 50 में ले उस दिन तो अपना मैं एंट्री दे रहे तभी आ गया था, अभी एंट्री नहीं दी ना। ठीक है, बोलना शुरू करो ना, बोलोगे तो वैसे ही। ओके, शुड वी स्टार्ट कि वेट करें अभी 2-4 मिनट? करें स्टार्ट? ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. So today our topic is ematics and anti-ematics. Emesis means vomiting. So first question that comes in our mind, that what is vomiting? And before vomiting, we must understand that what is nausea. So emesis or vomiting, that means a forceful expulsion of gastrointestinal contents through the mouth. That is vomiting. And nausea is an imminent desire to vomit. An imminent desire to vomit, a feeling, that is the nausea. Now there is a center in our brain that receives and that integrates the vomiting impulse. This center is present in the medulla and that is known as vomiting center. The vomiting impulses, they are coming from the CTZ, that is chemoreceptor trigger zone, vestibular apparatus, cerebral cortex and GIT. Okay, is it audible? Sonia, सुनाई दे रहा है? ये हाथ उठा के बताना. सोनिया, बैरागी, तेज बहादुर, सुनाई दे रहा है बरोबर? Okay. Now vomiting, we understood that the forceful expression of gastrointestinal contents through mouth. Now where it is indicated? First thing, vomiting that is indicated in the management of poisoning, where we want to vomit all the poison out from the GIT. But in all the cases of poisoning, vomiting is not indicated. Therefore, we must understand what are the contraindications to emesis. So if we can remember the contraindication in all other poisoning, we can indicate vomiting. So let us see the contraindication. We are grouping these contraindications according to the defect which can be produced by the forceful expression of the forceful induction of vomiting.
So with some poisons, there is risk of gastric perforation and necrosis. This occurs with the strong corrosives like acids and alkalis. So in the acid poisoning or alkali poisoning, it is not indicated. Then in some cases, there is risk of regurgitation and aspiration of gastrointestinal contents in the lungs. So that can lead to the chemical pneumonitis. So here also we do not indicate vomiting, and examples are the patients in the coma, stupor, that is a semi-conscious stage, and delirium, that is the acute toxic confusional state. Then poisoning with the petroleum distillates like kerosene, gasoline, liquid furniture polish, etc. That is also not indicated. Absence of cough reflex. If cough reflex is absent, then it is also not indicated, because cough reflex, as you know, that is protective, protecting the entry of the gastrointestinal contents in the respiratory system. And in infants of age less than 1 year, vomiting, forceful induction is contraindicated, because the reason is same, cough reflex is not very well developed and there can be regurgitation in that. Okay. So that is this. Then in some situation, there is enhanced risk of conversions because of the stimulation of the CNS. So poisoning by the conversions like strychnine, camphor, tricyclic antidepressants, CNS stimulants, that is also the contraindications to vomiting. Then there are some conditions where vomiting is ineffective and there is a risk of obstruction and aspiration. For example, presence of foreign bodies. So foreign bodies will not be vomited out if it is of large size, and it can create the trouble of the obstruction, etc. Then there are some conditions where there can be additional damage to the GIT. For example, hematemesis, the blood vomited out from the GIT. So that could create the problem. Okay. So there are some contraindications to emesis. So induction, that indication is the poisoning. Except the poisoning where we have seen the contraindication, all other poisoning we can use. Now the question is how to induce vomiting. कैसे हम induce कर सकते हैं vomiting? The most simple, commonly adopted method is the mechanical method by stroking the posterior pharynx with the 2 fingers. We stroke the posterior pharynx and that induces vomiting. Then another is the use of hypertonic saline. This hypertonic saline withdraws the fluid in the stomach. That irritates the mucosa of the stomach, withdraws the fluid in the stomach. That further irritates and there occurs reflex emesis. Then Epica. This Epica that is rarely used nowadays because that is containing a highly toxic substance, that is emetine. The Epica that locally irritates the GIT and stimulates CTZ to produce vomiting. Then the immediate method to induce vomiting is apomorphine. The subcutaneous injection of apomorphine that stimulates CTZ produces effect within 3 to 5 minutes. So they are the various methods to induce vomiting which are adopted in the management of poisoning to remove the poison from the GIT. So with this brief concept, now let us come to our major topic, the anti-ematics. Means the agents which are used to control vomiting, to control emesis. The basic need is the consideration of the cause, that what is the cause and to eliminate the cause. But in the meantime, since vomiting is troublesome for our patients, so we need the symptomatic control till we are able to eliminate the cause. We need the proper symptomatic control to this vomiting. Now, we are going to see the classification. A number of drugs, number of antiemetics are available. The market is flooded with these drugs. So what should be our proper selection? थोड़ा सा अभी आप लोग समझने में ध्यान देते हैं, इनके जो नोट्स हैं हम लोग जो क्वेरी के रूप में आपसे पूछते जा रहे हैं बार बार, उसमें सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं और वो आप चाहे तो अपने रिकॉर्ड में भी रख सकते हैं. वो आइडिया अच्छा लगा कि नहीं आप लोगों को?
क्यों सोनिया अक्षिता जो दिख रहे हैं, अच्छा वो आइडिया, इसमें आपको सारे नोट्स तैयार मिलते हैं, उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं आप, और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मिल रहे हैं। तो अभी वॉमिटिंग वाली क्वेरी भी आने वाली है, उसमें सारे आएंगे पूरे, कुछ चीजें हमने बताई कुछ नहीं बताई वो भी सब आ जाएगी उसमें। ओके, सो फॉर द प्रॉपर सिलेक्शन we need the basic concept of the receptors which are present at the particular site which is responsible for the induction or for integration of vomiting. So major we have seen in the medulla is the vomiting center. The receptors present are 5-HT3, D2, M1 and CB1. 5-HT3 that is 5-HT receptors, D2 dopamine 2, M1 muscarinic 1 and CB that is CB is cannabinoid receptor. So all these receptors except one, ये ध्यान रखें जो बताया इनमें से एक है which is suppressing vomiting, others are stimulating vomiting. So we will come to that aspect. Then at the chemoreceptor trigger zone, the receptors are 5-HT3, D2, M1 and CB1. At vestibular apparatus, H1 and M1, and at GIT 5-HT3 and D2 receptor. So keep these receptors in mind. We will see the utility of these drugs. Antiemetic classification. So we have seen the involvement of the various receptors. So ये बीच में कोई जो गड़बड़ कर रहा है ना करे, ध्यान रखे जरा ना, जो बीच बीच में कुछ उसको ना करे. So we can classify these drugs as 5-HT3 antagonist, anti-dopaminergic that is D2 antagonist. Then there are some prokinetic drugs with central anti-dopaminergic drug, prokinetic with peripheral anti-dopaminergic, antihistamines, substance P antagonist, cannabinoid agonist. This is agonist and not, and some miscellaneous corticosteroids, benzodiazepines. So let us see these drugs in little detail. So first group is of 5-HT3 antagonists, which is nowadays the most popular group of antiemetics. The drugs in this group are ondansetron, granisetron, dolasetron, and palanosetron. They can be used orally or by intravenous administration, or even intramuscular injection that can also be. In this group, the last one, palanosetron, that is having a longer half-life for about 40 hours. Now, these drugs are highly effective for prevention and treatment of chemotherapy-induced vomiting. Here you are seeing that we have marked it early phase. So what is this early phase, delayed phase? We will see shortly with some other group of the drugs, the early phase of vomiting and delayed phase. But remember that they are better effective in the early phase of chemotherapy-induced vomiting, post-operative vomiting, and vomiting due to radiation, etc. Why they are effective? Because these 5-HT receptors, especially at the area postrema, also on the GIT or vomiting center, that is stimulated to induce vomiting, and once we antagonize the receptor, that is effective. The adverse effects of this group are the headache, constipation, dizziness, QT prolongation. Occasionally there could be QT prolongation. Then the next group is of anti-dopaminergic. The details of this group we will see with the antipsychotic drugs, because basically they are used as antipsychotic drugs. So there are two groups of the traditional typical antipsychotic. One is phenothiazines and butyrofenas. We are talking about typical. There is atypical. They are different. So phenothiazines and butyrofenas, all phenothiazines except thyroidazine are anti-emetic. The exception इसलिए देखें कि ये MCQs में आते हैं अक्सर ना. So don't create the disturbance in the slide. ये कौन कर रहा है? तो ध्यान से रखें अपना, इस पे हाथ ना चलाए. Then these anti-dopaminergic drugs, they are useful to control all the types of vomiting except that of motion sickness. These drugs can produce sedation, hypotension, and EPS, that is extrapyramidal symptoms. That is the
major problem of this typical antipsychotic. Therefore, we are having an atypical that we will see with the antipsychotic drugs. That is the separate aspect. So that is the drugs in this group are the chlorpromazine, chlorpyrrazine, prochlorpyrrazine, etc. That we will see later on. Then the next important group that is used in the clinical practice to control vomiting is prokinetics. So let us understand what are the prokinetics and why they are used in the clinical practice. Prokinetics means agents that enhance the gastrointestinal motility. Kinetic means movement. Prokinetic, that is prone for movement, that is enhancing gastrointestinal motility. If there is gastric hypomotility, the problem is that delay in the gastric emptying, and this produces nausea, vomiting, heartburn, post-meal discomfort, and indigestion. So these are the problems because of the delay in the gastric emptying. Also, there is gastroesophageal reflux. So gastric content that is coming in the esophagus. So that can lead to the esophageal ulceration. So the treatment of this hypomotility is to increase the gastric motility, and for this purpose we are having prokinetic agents. So prokinetic agents are useful in the disorders because of the hypomotility, and so these drugs are enhancing the gastrointestinal motility. Now, how does a prokinetic act? The major effect is by enhancing the release of acetylcholine. This increase in the release of acetylcholine can be by various mechanisms. This is by 5-HT4 agonistic effect, agonistic stimulation of 5-HT4 receptors. This is anti-dopaminergic effect and by anti-5-HT3 effect. So all these three effects, they are contributing to the enhancement in the release of acetylcholine. And this increased SEH stimulates muscarinic receptor, and this lead to the increase in the gastrointestinal motility, that is prokinetic effect. It promotes gastric emptying. It is leading to the enhancement in the esophageal clearance, and it enhances the tone of lower esophageal sphincter pressure. So all these are the beneficial effects of a prokinetic drug. Then these prokinetics are having anti-dopaminergic activity also. They are having D2 blocking effect, which is helping as prokinetic and which is helping in some other ways, which is also creating some problem. So anti-dopaminergic actions that produces anti-emetic effect at CTZ, mainly at chemoreceptor trigger zone. That produces extrapyramidal symptoms because basal ganglion dopamine that is required at the basal ganglion, if there is inhibition or blockade, there is extrapyramidal symptoms. That means Parkinsonism like features. That is the problem. Then prolactin release inhibiting hormone. What is this? This is nothing but dopamine. So dopamine inhibitor, that means they will increase the prolactin release. Therefore, there is problem of galactorrhea, breast tenderness, and menstrual irregularity. Anti-dopaminergic, whatever this we are seeing as prokinetic, there is no useful antipsychotic action. Rather, they can lead to anxiety, depression, and sedation. तो उनके contemporary जो हमने देखे antipsychotic, phenothiazine, उनके समान antipsychotic activity is not there. Rather, there could be some problem there. Okay, are you hearing? Or it is clear? आ रहा समझ में? अक्षिता, हाथ उठा के बता दो. अक्षिता, राहुल, okay, राहुल. Then adverse effects of metoclopramide. So metoclopramide, that is we are seeing as the representative drug of this prokinetic, which is having central anti-dopaminergic effect, which is also labeled as first generation prokinetic. Adverse effect, that is just revision, that we have seen that they can produce sedation, restlessness, anxiety,
extrapyramidal symptoms, that is Parkinsonism. Parkinsonism is only one component. There are many others. जो आपने आज की जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली क्वेरी देखी उसमें एक दूसरा फीचर था उसका एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम का. देन डायरिया, galactorrhea, breast tenderness, menstrual irregularities, gynecomastia or impotence. And in neonate, especially in the premature neonate, there could be the problem of methemoglobinemia with metoclopramide. So they are the potential adverse effects. Then the indications of this prokinetic, especially we are considering the first generation, the therapeutic indications are for the symptomatic control of vomiting, in the management of reflux esophagitis, paralytic ileus, diabetic gastroparesis, then to facilitate gastrointestinal intubations, to promote the radiological examination of gut and gastrointestinal emptying. So whenever we need the enhancement in the gastrointestinal emptying, for example, pre-anesthetic medications, we can, agar patient is not on empty stomach, then we can take the help also. Then to promote postpartum lactation. So as a secretagogue to the milk, lactogogue, that is also used. Then we have seen some problems with the first generation, that is the prokinetic with central anti-dopaminergic. So there has been introduction of the second generation prokinetic. The drug is domperidone. So first generation is having drawback of the central effects, that is extrapyramidal symptoms. This drug domperidone does not cross blood-brain barrier, so has only peripheral anti-dopaminergic action. It is not crossing blood-brain barrier. So no extrapyramidal symptoms, no neuropsychiatric effects. But there is anti-emetic and prolactin release effect. They are equally shared by these anti-emetic. Why it is showing anti-emetic when it is not crossing blood-brain barrier? Can you think? Large molecule. Yes. कौन बोला? शुभम. Ravi Patel. Yes, that is, this CTZ is not within the limit of blood-brain barrier. वो बाहर है CTZ. मगर why there is prolactin release? Pituitary से हो रहा है prolactin release. इसका क्या आंसर है? शुभम, राहुल. Yes, anyone? सोनिया. सर डोपामिन के कंसंट्रेशन की वजह से डोपामिन हो रहा था, ब्रेन में नहीं पहुंचा, उसके पहले कैसे हो गया उसका? The same answer, that is, it is also behind the limit of blood-brain barrier. Pituitary जो है ना, वो भी blood-brain barrier से बाहर है. ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है ना, ध्यान रखें, दोनों मेन सेंटर है, इसलिए वो भी वहां भी पेरिफेरल इफेक्ट आ रहा है उसका. So this drug domperidone, that is preferred for the patients prone to develop EPS and patients having vomiting because of levodopa. Then there is the next group, that is of third generation prokinetic. The drug, the representative drug from this group is cisapride. This is having 5-HT4 agonistic effect but no anti-dopamine. Means 5-HT4 agonistic effect will enhance the release of acetylcholine, but there is no anti-dopamine. So there is no extrapyramidal symptoms, no prolactin release, and no anti-emetic. But you will find that it is been categorized in some books in the emetics, anti-emetic group. The reason is that it can act as anti-emetic if decreased GI motility is responsible for emesis. For example, in diabetic gastroparesis, there it can act as anti-emetic. In otherwise, other vomiting, it is not effective. So
Rather, it is producing effective stimulation of the colon, and that makes it useful in the management of chronic constipation. So that is useful in the management of chronic constipation. But there is problem, though it looks attractive that no extraordinary symptoms, no prolactin release, no problem, but एक एस्पेक्ट अच्छा है तो दूसरे एस्पेक्ट, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता ना, तो गड़बड़ हो गया इसमें. सो सेसाप्रेट बैंड बंद कर देगा, विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट. द रीजन इज दैट though occasional, though rare, but there is risk of arrhythmia with this drug. It blocks potassium channel, prolongs QT interval, can produce arrhythmia, and that is a fatal condition. Arrhythmia, especially, it is observed with enzyme inhibitors that inhibit its metabolism, enhance the toxic level, produces the problem. So drugs like erythromycin, clarithromycin, ketoconazole, gluconazole, indinavir, etc., they can produce this problem, and therefore this drug is completely banned, removed from the market. Then there are some introduction of other third generations and some other drugs. दोनों हमने एक में ले लिए. So they are claimed to be free from the risk of arrhythmias. So mojapride, that is available in our market, that is claimed to have less risk of extrapyramidal symptoms and this cardiac toxicity. Prucalopride, that is a specific 5-HT4 receptor agonist, no effect on the 5-HT1B and D receptor, and so heart, that is a sparing effect, no potassium channel blocking effect, that is there. Etopride, that is metabolized by a separate category of enzyme FMO3, flavin monooxygenase 3, and levosulpride, that is antipsychotic as well as having prokinetic effect by D2 antagonist mechanism, not by 5-HT4. That is, so there are other some newer drugs in this group. Then indication of a third generation prokinetic, mojapride, etopride, etc. So they are used in the gastroesophageal reflux disease, then in gastroparetic conditions like diabetic gastroparesis and chronic idiopathic constipation. So they are not used as antiemetic. They are having different category of indications. Then there are other drugs which are showing the prokinetic effects. One is the motilin agonist, and that erythromycin, which is basically used as an antibiotic, that is having agonistic effect on motilin. Motilin is a local hormone in the GIT that stimulates gastrointestinal motility. So erythromycin, that is antibiotic, that is having its own benefits, is harm, etc. So a non-antibiotic chemicinol that has been developed, chemicinol as motilin agonist. Then dexpanthenol, that is another newer drug, that is a congener of pantothenic acid, which is acting as a cofactor in the synthesis of acetylcholine. So that is enhancing the level of acetylcholine. Octreotide, that is a somatostatin analog, that is also used in some patients with intestinal dysmotility. And ghrelin receptor agonist. You know what is ghrelin? Ghrelin क्या है? Yes, anyone? What is ghrelin? मुझे ये दिख रहा है कौन? सोनिया दिख रही है, राहुल दिख रहा है. Sonia, what is ghrelin? The name is indicating its function. Name itself is ghrelin. है ना, नाम बड़ा घृणास्पद लगता है, घृणा वाला नाम है क्या? ग्रे ग्रे. तो ग्रे क्या होता है? जीएच. रवि, आप पिक्चर में आ गया, रवि पाटीदार बोलेगा जवाब. जीएच क्या है? जीएच कहाँ सुना है? जीएच का मतलब हार्मोन है सर. कौन सा? ग्रोथ हार्मोन ना. जीएच इज ग्रोथ हार्मोन. सो ग्रोथ हार्मोन रिलीज इंड्यूसर. रेल फॉर रिलीज, आयन फॉर इंड्यूस. So basically it is a growth hormone release inducer, that is ghrelin. It is also having function in the GIT to control the appetite, etc. That is also there. So ghrelin receptor agonist, ralmorelin, that is also a newer drug as prokinetic. Then the next group is of anticholinergics. These groups we have seen in detail. का थोड़ा सा short reference हम antiemetic effect के हिसाब से देख रहे हैं. Scopolamine, that is preferred for prevention of motion sickness. अभी ध्यान रखें कि हम लोग हमारे कभी पेशेंट को मोशन सिकनेस स्कोपोलामिन नहीं लगाते इंजेक्शन या वो देते हैं,
that is specially preferred for the long-term motion sickness, either by subcutaneous injection or topical release patches. कान के नीचे sustained release topical patches, for example, sea sickness, लंबी सी की यात्रा जा रहा है, तो that is you. For the short-term travel, we are using other category of the drugs. The adverse effects of anticholinergics are the typical problem like dry mouth, blurring of vision, drowsiness, constipation, urinary retention, etc. So they are the typical. Then the next group is of antihistamines. Now we know about the two generations of the antihistamines, first and second. The first generation, like diphenhydrinate, diphenhydramine, promethazine, cyclin, etc., they are useful as antiemetics. Second generations, they are not significantly useful as anti-emetic. First generation, because with H1 blocking effect, they are also having additional anti-muscarinic effect. So both these effects, they are beneficial here. The major problem with the first generation is the sedation, but they are the good choice for the prevention of the motion sickness. But they are very effective if given half an hour or 1 hour before traveling. Then only they are effective. Once the vomiting starts, they are not effective. So they are given an hour before the traveling. They are usually effective for 6 to 8 hours. They may require the repetition for a long journey. The next group is of the substance P antagonist, that is NK1 receptor antagonist. Substance P, that is acting on the various neurokinin receptor and neurokinin 1 receptor that is involved in the emesis. So its antagonists, the drugs are aprepitant, vofapitant, fosaprepitant, and a newly introduced drug rolapitant. So that is this. Now these drugs are well effective in controlling chemotherapy-induced nausea and vomiting. Chemotherapy-induced nausea. So their indication is chemotherapy-induced nausea. Now in the anti-malignant chemotherapy, especially if we take example of cisplatin anti-cancer drugs commonly used in, there are two phases of vomiting. One is the acute phase of nausea and vomiting that is occurring within 24 hours. So early period occurring. In this phase, 5-HT3 antagonists, they are well effective. Then there is a delayed phase that occurs in 2 to 5 days of the administration of the drug. And this delayed effect is very well controlled by this substance P antagonist. So usually we use a combination of the two drugs. Aprepitant, that was the first drug that is used orally, especially for delayed phase. Now there has been introduction of rolapitant that is having a very long half-life, about 180 hours. So that is the advantage of this drug, rolapitant. Then the next group is of cannabinoid agonist. Cannabinoid agonists, the drugs are dronabinol and nebilon. Now these drugs, they are stimulating cannabinoid receptor in and around vomiting center. We have seen the cannabinoid receptor that are present in the vomiting center, and their stimulation is suppressing the vomiting. So therefore they are useful. They are used especially in the radiation and chemotherapy induced vomiting. The additional advantage is that they also enhance the appetite. So used in patients of the AIDS and in anorexia, they are used. The adverse effects, because they are cannabinoid derivative, so central sympathetic effects like tachycardia and marijuana, so these bhang, ganja, charas, unke effects. So marijuana like highs, like euphoria, anxiety, nervousness, detachment, panic, mood changes, laughing, thinking abnormality, abstinence syndrome, etc. So that could be the problem. But these drugs are the reserved drug used only in the cancer chemotherapy induced vomiting, especially in the radiation induced vomiting. Then there are some adjuvants to the antiemetics. They are required again in the radiation induced vomiting and chemotherapy induced vomiting, because that is difficult to manage with traditional antiemetic drugs. So adjuvants to antiemetics are corticosteroids and benzodiazepines.
Corticosteroids, they are the powerful anti-inflammatory drugs, so they suppress the peritumoral inflammation, the inflammation around the tumor. Also suppress PG, prostaglandin production, and thereby decrease vomiting tendency in chemo or radiotherapy. So that is their role. So they are used as an adjuvant to the basic drug that we have seen. Then benzodiazepines, they induce sedation. We will see the sedative hypnotics in some other class, where one of the major drug is the group of benzodiazepine, diazepam, lorazepam, temazepam, etc. So they induce sedation. They also produce anti-anxiety and very typical amnesic effect, loss of memory. Therefore, they inhibit anticipatory component of nausea and vomiting. Anticipatory, इसका सोच के ही उल्टी आने लगती है. That is anticipatory component. Chemotherapy patient. So that is the way that is helping. Now, अभी एंड नहीं हुआ है, अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन just information that please try to solve the questions of update 69A, जो questions आप लोग देखे होंगे जो हमने दिए, और इसके बाद जो अगला आने वाला है वो दोनों में इस टॉपिक से आपको हेल्प मिलेगी. So this class will help you to solve them. Some questions are to understand your ability to read between the lines. कुछ बातें जो कहीं नहीं है लेकिन में कहीं ना कहीं छिपी हुई है, वो भी समझ में आएगी कि क्या है उसका क्या. And you know that proper understanding is the only way to bring happiness on the face of your patient. So let me see the happiness on your face also. Okay. आ रहा था, क्लियर था, पिक्चर क्लियर थी, समझ में आ रहा था, आवाज क्लियर थी. यस सर. ओके, प्रॉब्लम का इसमें कुछ विजिबिलिटी प्रॉब्लम? नहीं सर. नहीं सर. कोई एक्सपर्ट हो, शुभम या कोई जो अटेंडेंस का वो रिकॉर्ड ट्रेस ले सकता है इसका रिकॉर्ड? तो वो ले लेना एक बार, वो रिकॉर्ड ट्रेस कर लेना. वैसे अपने तो दूसरे तरीके अटेंडेंस के, दूसरे तरीके, जैसे एक आज अपन लोगों ने सुबह बात करी थी, उसके बाद आपका असाइनमेंट अटेंडेंस हो रही है. तीसरा आपको जो लिंक दे रहे हैं, लिंक खोल के वहां पर जो कर रहे हैं, वहां पे कोई या तो कोई लाइक दे रहा है या मैसेज दे रहा है या कुछ कर रहा है वो एक्टिविटी, वो भी रिकॉर्ड हो जाती है. अगर आप वहां लाइक करेंगे उसको तो भी पता हो जाएगा किसने देखा या नहीं देखा, किसका इंटरेस्ट था या नहीं था. उसके लिए जरूरी है कि उसको लाइक करें या कुछ उसमें लिखे कमेंट या कुछ भी अपने थंब सिग्नल दें या कुछ दे, तो पता चलता है कि हाँ ये लोग इन्वॉल्व है ना. अब एक प्रश्न ये कि क्या वाकई फायदे में है कि नहीं आपको? बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही. तो हम लोग ये कर रहे हैं फायदा है नहीं, क्योंकि इसमें क्या है कि ये टाइम बाउंड एक्टिविटी नहीं है. जब भी आपको फुर्सत हो, आज कल 6 महीने बाद 2 महीने बाद, तब आप खोल के देख सकते हो, आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा. और ये सब शॉर्ट में जो दिए गए हैं, ये शॉर्ट में एक तरह से शॉर्ट में आपके नोट्स होगा बजाय किताबों में ढूंढने के. किसी भी एक किताब में इतना मटेरियल नहीं मिलेगा, ये क्लियर रखें, है ना. कोई सी भी किताब देख ले आप, हैरिसन देखना है, गुरमन देखना है, तो उसमें 100 पेज देखेंगे तब जाके 2 पेज के नोट्स बनेंगे. तो इसलिए आपको रेडीमेड मिला, तो ये आपके पास सेव करके रख सकते हैं आप. जब आप प्री पीजी देंगे, जब आप फाइनल में मेडिसिन पढ़ेंगे, इट इज नॉट ओनली फार्माकोलॉजी. ये हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं सब सब्जेक्ट्स का आपस में, कि फार्माकोलॉजी के साथ जैसे आज की कैरी में जो कुछ ऑब्स्टेटिक्स कंपोनेंट भी जुड़ा हुआ है, कुछ पीडियाट्रिक्स का भी जुड़ा हुआ है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कंटिन्यू करें या रोकें? हालांकि इसमें मेहनत बहुत लगती है तैयार करने में. करें कंटिन्यू? कंटिन्यू कर सर कंटिन्यू कर लीजिए. कंटिन्यू करिए सर. पहले हमने शुरुआत करी थी तुम्हारी सीनियर बेस से, सिर्फ बेच को दिया था, लेकिन उसके बाद में कई दूसरे कॉलेज के बच्चों जो भी, उन्होंने कहा कि हमको ही फायदा मिले, इसलिए वो फेसबुक वाला लिया कि वो लिंक आप डेंटल वालों को भेज देते हैं, बीपीटी को, सीनियर्स को, इंटर्न्स को, वो लोग भी अपने देखकर सभी को उसको बेनिफिट मिल जाता है. प्लस दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो अब इस मैच्योरिटी के एज में आ गए हम लोग कि अपना भला बुरा सोचे ना. तो कोई फोर्स करे, कोई अटेंडेंस लेने का बोले, अटेंडेंस करोगे, हम अटेंडेंस पे इतना ध्यान नहीं देने वाले, लेकिन आपकी एक्टिविटीज, आपके वर्क जो कि आपको फायदे का रहेगा, है ना, दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू. इसलिए क्योंकि टीचिंग शुड बी एन एंजॉयमेंट. क्लास में भी देखा आपने, कोई फालतू बात अपन ने कभी क्लास में नहीं, जो काम की बात है, जो वाकई एक्सट्रैक्ट जो हमें पता होना चाहिए, वही बात करें. हमने ये बात नहीं करी इसकी केमिस्ट्री की, ये केमिकल ग्रुप की ड्रग है, इसकी केमिस्ट्री ये है, उसका ये प्रॉब्लम है, उसका ये है, बेकार. क्योंकि आपको जो रिमेंबर, आवर माइंड इज हैविंग ए लिमिटेड कैपेसिटी, है ना. लिमिटेड मतलब अनलिमिटेड है, वैसे तो बहुत हम यूज ही नहीं कर सकते उतना,
मगर फिर भी अगर उसमें हम कचरा भरेंगे तो कचरा काम की बात है नहीं, इसलिए काम की बातें अपने स्टोर करके रखो। कुछ बच्चों ने पूछा था कि हमको पैथोलॉजी में बोला कि एक अलग से कॉपी बना लें, तो क्या हम यहाँ भी बनाएं? तो ये तो आपके फायदे के लिए भाई, आप नहीं बनाओगे या चीटिंग करो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बना लोगे तो अपने को काम आएगी। अगर वो उसमें अपने सेव करे, क्वेश्चंस के आंसर लिखने लगे, सही गलत कैसे भी लिखो, किताब में देखो, गूगल में सर्च करो, कुछ भी लिखो, उसके बाद अपने चेक कर लिया आंसर्स के। आंसर्स भी तो देंगे, अभी देखेंगे आप अस्थमा के जो आंसर देंगे चार, तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन वाइज आंसर नहीं देंगे। वाट आर लाभा, तो हमने लिख दिया ये लाभा चार, वाट आर, ऐसा नहीं। एक नोट्स कंपोनेंट में मिलेंगे, उसमें से आप सारे आंसर मिल जाएंगे। 2-3 आंसर उसमें फिर भी नहीं मिलेंगे, वो देखना कौन से आंसर नहीं मिल रहे, पूछना उसको, या उसमें उसी लिंक में वहाँ फेसबुक साइट में वहाँ कोई ढूंढ सके तो डालना, उसमें वहाँ पूछना करेंगे। क्योंकि the only idea is that you should involve in active teaching. Teaching should never be passive. आप खुद में उत्सुकता होना चाहिए, खुद में जागरूकता होना चाहिए कि हम ढूंढे, हम खोजे, हम पढ़े, हम सही करें। अभी कई बच्चों के आते हैं सर हमने जवाब सही दिए या गलत दिया आप बताओ, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी ना। एक एक का मैं इतना डिटेल में तो पढ़ नहीं सकता, और एक एक का कमेंट बनाओ कि इसने ये गलती करी, इसने वो गलती करी, ये तो संभव है ही नहीं। क्योंकि 150 बच्चे तो आपकी बैच के, सीनियर बैच के भी है, बीपीटी है, डेंटल भी है, और दूसरे कॉलेज के बच्चे भी कांटेक्ट में रहते हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए सेल्फ असेसमेंट की आदत डालो। आज का कैसा लगा था वो जो हमने 10 मिनट का आपको टास्क दी थी? एक नंबर। हाँ, अच्छा था सर। उसमें पर्पज अपना ये था कि आप अभी तो एक क्वेश्चन फोकस करो, लेकिन उस बहाने आप 12 को पूरे 20 क्वेश्चन देखेंगे। ये तो अपना नेचर है कि हम ऐसा थोड़ी कि हमारे क्वेश्चन देख के बंद कर देंगे उसको, 20 देखेंगे, उसको कोशिश करेंगे दिमाग लगाने की ये अपने को पता है या नहीं पता है। लिखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो भी सोचेंगे तो सही, इस पे ढूंढेंगे, फिर जब वो आंसर आएंगे तो उसमें देखेंगे। एक बार 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 आपका रिवीजन हो जाएगा उस टॉपिक, और टॉपिक आपके लिए मजबूत हो जाएगा, हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में आज जहाँ 4 बजे आपको आंसर मिल जाएंगे इसके सारे। इसके बाद कल हम एमसीक्यू टेस्ट लेने वाले हैं अस्थमा पे। कल शनिवार को अलॉटेड क्लास पैथोलॉजी की थी, मगर वो लोग नहीं लेंगे दोपहर में, तो एमसीक्यू टेस्ट होगा। वो किस फॉर्मेट में होगी, कैसे होगी, बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। सिर्फ टॉपिक अस्थमा ही है, आज इतना पढ़ लिया, ये पढ़ेंगे आप, फिर वो तो कुछ एमसीक्यू का कैसे क्या सारा उसको आपको समझा देंगे ना। वो जो समझाया था उन्हें समझ में आ रहा था कि नहीं, जो आपको व्हाट्सएप क्लियर था ना, हर चीज क्लियर दे देंगे आपको, कैसे करना है एमसीक्यू का प्लान की कैसे करेंगे। जितने भी अभी क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं 15, 20, 10, 20 जितने भी रहेंगे उसका आपको दे देंगे। ग्रुप अलॉट कर देंगे, टीचर अलॉट कर देंगे कि इस टीचर को इतने लोग भेजे आंसर, जैसे 1 का A, 2 का B, 3 C, ऐसे लिख के फटाफट करके 10 मिनट या 15 मिनट 20 मिनट जो टाइम रहेगा उस टाइम में आपके पहुंच जाना चाहिए, है ना। ये सब कर देंगे, या फिर आपको कोई लिंक दे देंगे। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आपको लिंक दे दी, उसी में आप पोस्ट कर दें, तो वो रिकॉर्ड भी आ जाएगा कि ये रिकॉर्ड भी हो गया, किसी में आपने डाल दिया, सब फटाफट डाल दिया। टाइम लिमिट रहेगी 10-15 मिनट में, बाकी उसमें उसके बाद वाला ठीक है, बाद वाला करे अपने भले के लिए कर ले, पर उनको कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। और ये सारी एक्टिविटी में जो एक्टिविटी भाग लेंगे उन 3, 4 या 5 लोगों को कुछ प्राइज भी रखेंगे कॉलेज आने के बाद, है ना। जब कोरोना से मुक्त हो जाएंगे हम लोग, हो जाएंगे। ओके, अभी इसमें कुछ नए प्लान कर रहे हैं, सिंपोजियम वगैरह प्लान करेंगे, पैनल डिस्कशन वगैरह नए नए स्टाइल में मिलेंगे अपन, ताकि नयापन फ्रेशनेस बनी रहे, अलग अलग स्टाइल में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ओके, अब आपका किसी के क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई फीडबैक, जो अपना मेथड चल रहा है टीचिंग का, ये क्या कुछ पूछना सर चाहते हैं? आपके क्लास में ट्रक पढ़ाई थी एवोमेन करके, बस उसका नाम पता है मुझे, लेकिन वो कौन से ग्रुप में आती है सर वो ड्रग? प्रोमिथाजिन, तो बताइए ना, मोशन सिकनेस में एंटीहिस्टामिनिक, दैट इज एवोमिन। एवोमिन इज ब्रांड नेम, है ना। प्रोमिथाजिन दैट इज फार्माकोलॉजिकल नेम, दैट इज इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। एवोमिन दैट इज वेरी फेमस ड्रग, वेरी पॉपुलर फॉर द मोशन सिकनेस, दैट इज प्रोमिथाजिन, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर मोशन सिकनेस, है ना। एवोमिन, फिनार्गन, दैट इज प्रोमिथाजिन। अभी इस स्टेज पे एवोमिन तुम्हें पता रही तो अच्छी बात है, वो तो क्या जब कहीं देखा होगा पेशेंट के, जो देखे प्रिस्क्रिप्शन समझ में आया, लेकिन जब टीचिंग और लर्निंग के साथ पढ़ना तो आपको प्रोप्राइटरी नेम पे इतना ध्यान नहीं, नॉन प्रोप्राइटरी नेम जो आए हैं इंटरनेशनल, जैसे प्रोमिथाजिन, वो याद करना, क्योंकि ब्रांड नेम तो 2500 कंपनियां के अलग अलग, हम किस किस के याद रखेंगे,
फिर जब हम क्लिनिकली यूज करेंगे इनको तब देखेंगे कि कौन सा है ब्रांड नेम क्या 2-3 वगैरह, दैट विल बी। तो अभी आपको पढ़ाने में पैटर्न में अपन ये रखना है कि सिर्फ ये करें। और कुछ? अच्छा, अटेंडेंस का रिकॉर्ड कर लिया किसी ने? फोटो खींच लिया क्या? शुभम कहाँ है? शुभम खींचे। शुभम धाकड़, शुभम हाँ ले लिया क्या फोटो? जो साइड ट्रैक्स का कौन, राजकुमार ने लिया क्या? किसने लिया भाई? हाथ करो या बोलो मुंह से, तो किसने लिया? नहीं सर। तो ले ना तुम। 52 स्टूडेंट है, मतलब 50 मेरे को छोड़ के 52 प्रेजेंट है। सर स्क्रीनशॉट्स ले लिए, लेकिन कुछ बच्चों के इसमें मोबाइल के नेम आ रहे हैं, रेडमी और ऐसे करके, तो उनका नाम नहीं पता। इसकी शॉट ये फोटो वाला नहीं लेना, वो वाला जो साइड से आता है ना, साइड ट्रैक में पार्टिसिपेंट्स। हाँ पार्टिसिपेंट्स वाला आता है ना, उसमें मेरा भी नाम आ रहा होगा पार्टिसिपेंट में। सब पार्टिसिपेंट्स में से ही लिया है, लेकिन कुछ के मोबाइल्स के नाम आ रहे हैं, आने तो कोई बात बच्चों के नाम की जगह। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है, हाँ किसी का नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। आने तो कोई बात नहीं आ रहा है, आ रहा है, ना, आ रहा वीडियो है। मेरे को भेजना। अपन ये सब ट्रायल पे चल रहा है, इनका चिंता की बात नहीं, इसमें टेंशन मत लो। अभी तो हो सकता है हमारी बात चलेगी, अगले हफ्ते से कोई नया प्रोग्राम दे देंगे, क्योंकि जूम से कई लोग डर रहे हैं अभी। हालांकि सबसे आसान यही है, लेकिन फिर भी एक नया प्रोग्राम अपने कॉलेज के हिसाब से बनवा रहे हैं, बन रहा है पूरा, और हो सकता है अगले वीक तक पूरा ट्रायल चल रहा है, हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो दैट विल बी ऊपर अच्छा हो जाएगा पूरा क्लासरूम। क्योंकि अभी ये सब लंबा चलना, लगता नहीं है कि जून तक आप लोग कॉलेज आ पाओगे, तो इस तरह से क्लासेस तो लेनी ही पड़ेगी अपने को, समय बर्बाद न करते हुए, है ना, पढ़ना। क्योंकि घर में बैठे बैठे भी बोर हो गए होंगे कि नहीं हुए बोर? नहीं हुए हुए सर। नहीं हुए घर में? हाँ। नहीं सर। नो सर। टाइम ही नहीं मिल रहा बोल रहे, इतना पढ़ा रहा है इंडेक्स में, ऐसा? यस सर, ये बात तो है। इतना ज्यादा पढ़ा रहा है कि क्या करे, मजबूर हो गए ना। ज्यादा लगता है तो बोल देना, हम कम कर देते। देखो हमने इसलिए वो टेक्निक अपने ही कि इसमें फुर्सत में पढ़ो, जब फुर्सत हो। रात को बोर हो रहे तो पढ़ लिया, दिन में हो रहे बोर हो तो कर लिया, है ना। टाइम लिमिट वाली नहीं है, कुछ टेक्निक ऐसी है कि चाहे जब मर्जी आए तो करो, घूमते घूमते करो। क्वेश्चन आंसर घूमते घूमते तैयार करता हूँ कि मेरा घूमना भी था घर में ही, बालकनी घूमते हुए रही है। और कोई पूछना है? नो सर। ये अच्छा लग रहा है आप लोगों को बहुत दिनों में देखने के बाद, है ना। और कुछ पूछना है आपको? थैंक यू। हाँ, ये व्यू चेंज करा, कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, कुछ लोग तो वीडियो बंद करके बैठे हैं, तो अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते हैं, मुंह धोया नहीं है ना सर, नजर नहीं लग नींद रहा का है। सो रहे थे सर। हाँ ज्यादा खूबसूरत सर सो गए? अच्छा सो रहे थे सर। हाँ बिल्कुल ठीक, सो गए। ये बात सही बोली कि सो रहे होंगे। कोई बात नहीं, जागने का समय भैया, जाग लो, जागो, है ना, जागो। सो ओके, करें, बंद करें? यस सर। पूछना किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं ना? ओके, अभी अपन इस टॉपिक पे भी आएगी क्वेरी, अगली क्वेरी इसी पे बन रही है, एंटी इमेटिक जो पढ़ा हमने कल, दूसरी बेस का भी हो जाएगा, उसके बाद फिर नया आना। ओके ठीक है, थैंक यू। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। ओके बाय सर।